Good morning student. Today I will explain super profit method problems. In previous lecture I was explain various terms which is related to super profit method. In this lecture I will explain some numericals which is related to super profit method. Let's take an example. In this problem, a partnership firm earned net profit during the past 3 years as follows. देयर आर ईयर्स वेरियस ईयर्स. एक पार्टनरशिप फॉर्म है जिसके पिछले 3 सालों के प्रॉफिट गिवन है आपको क्वेश्चन में. नेट प्रॉफिट इज 2018 2,30,000, 2017 2 लाख एंड 2016 1,70,000. Capital investment in the firm throughout the above mentioned period has been 4 lakh. कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो हुई है वो कितनी हुई है 4 lakh. Having regard to the risk involved, 15% is considered to be fair return on the capital, and return on this capital is return rate is 15%. The remuneration of the partners during this period is estimated to be 1 lakh per annum. Remuneration means salary जो पार्टनर्स को दी जाएगी इन दिस ड्यूरिंग दिस पीरियड मीन्स करंट ईयर में, which is 1 lakh per annum. Calculate the value of goodwill on the basis of 2-year purchase of average super profit earned during the above mentioned 3 years. So in this question there are 3 years 2016, 17 and 18. So firstly we have to calculate average profit. 2016, 2017, 2018 आपको ईयर्स गिवन है. देन प्रॉफिट in this question in 2016 profit is 1,70,000. 1,70,000. 2017 2 lakh and 2018 2,30,000. 2,30,000. Now according to previous method we have to add all years profit. There is no adjustment in this question, so we have to add all years profit which is 6 lakh. Total profit is 6 lakh. Now average profit. Total profit upon number of years. Total profit is 6 lakh and number of year which is 1, 2 and 3. 3 years are given. So average profit is 2 lakh. Now in second step we have to calculate normal. Calculate normal profit. What is the formula? Formula is capital employed into rate return on investment. ठीक है. So what is the capital employed in this? Capital investment in the firm throughout the above mentioned period has been means capital investment. आपको अगर capital investment दिया होगा, this is also called capital employed. So capital employed is 4 lakh and rate of return is which is return on capital which is 15%. So we have to take 15%.
which is 60,000. So normal profit is 60,000. Now what is the formula of an extra term is also given in this question. The remuneration of the partners during this period is estimated to be 1 lakh per annum. During this period means related to current year. तो जो भी आपको एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करने होते हैं तो उस एडजस्टेड प्रॉफिट या फिर बोल सकते हो आप एवरेज प्रॉफिट में से आपको अगर कोई एडिशनल रेमुनरेशन से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट है तो उसको आपको उस करंट ईयर या एवरेज प्रॉफिट में से क्या करना होता है, डिडक्ट करना, क्योंकि वी हैव टू पे इट. सो आवर एवरेज प्रॉफिट in this question 2 lakh. Average profit is 2 lakh. ठीक है, माइनस remuneration which is given in the question is 1 lakh per annum. मीन्स पूरे साल का आपका कितना है, 1 lakh. So after we deducting remunerations of the partner, the remaining average profit is 1 lakh. Now what is the formula of super profit? Average या फिर जिसको आप बोल सकते हो एक्चुअल प्रॉफिट भी आप इसको बोल सकते हैं. एवरेज और एक्चुअल प्रॉफिट minus normal profit. So what is actual or average profit, which is we have calculate 1 lakh and normal profit is 60,000. So super profit is 40,000. After that we have to calculate goodwill. So what is the formula of goodwill? Super profit into number of year purchase. So we calculate super profit which is 40,000. now take this 40,000 and number of years which is given in the question, number of years on the basis of this question on the basis of 2-year purchase of average super profit. So number of year is given in the question is 2. Now answer is goodwill is 80,000. Now tell you the answer. This question 80,000. I will take 18 question and answer is 80,000. Clear all of you? I hope you all understand this question. Now let's take another exam, numericals. Super profit method when past adjustments are made. In this question there is no past adjustment. Previous questions there is no further past adjustment. So I take this question. In this question there is various adjustment related to abnormal loss, abnormal gain. So firstly I read the question. Ayub and Amit are partner in a firm and they admit Jaspal into partnership on 1st April 2018. They agreed to value goodwill as 3-year purchase. आयुब और अमित पार्टनर है और उन्होंने एक नए पार्टनर जिसका नाम क्या है जसपाल, उसको एज ए पार्टनरशिप में एडमिट किया ऑन 1st April 2018. दे एग्रीड टू वैल्यू गुडविल और गुडविल की जो वैल्यू कैलकुलेट होगी वो 3-year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट इसके बेसिस पे कैलकुलेट होगी. फॉर विच दे डिसाइडेड टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5. इसके लिए उन्होंने जो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है उन लोगों को वो 5 year के बेसिस पे कैलकुलेट होगा.
सो आपको इस क्वेश्चन में 5 ईयर्स के प्रॉफिट गिवन है और उन प्रॉफिट से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट भी साथ में मेंशन है, ठीक है। द फर्म हैज़ टोटल एसेट्स ऑफ ₹20 लाख एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज ऑफ ₹5 लाख एज ऑन दैट डेट। फर्म की जो टोटल एसेट्स हैं वो गिवन है आपको कितनी, 20 लाख, और आउटसाइड लाइबिलिटीज़ कितनी है आपको, 5 लाख। एज ऑन दैट डेट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 10%। जो रिटर्न ऑन इन, या वो रेट ऑफ रिटर्न बोल सकते हो आप, वो कितना गिवन है सिमिलर बिजनेस से रिलेटेड, 10%। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो फॉर दिस क्वेश्चन फर्स्टली वी हैव टू कैलकुलेट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25, firstly we have to calculate average profit years. In this question there are various years, 2014, 2015, 16, 17, 18. Various years are given. Now profits, प्रॉफिट है आपका, फर्स्ट ईयर है आपका 1,50,000, सेकेंड ईयर 1,80,000, थर्ड ईयर 1 लाख, एंड फोर्थ ईयर 2,60,000, एंड लास्ट ईयर 2,40,000. Now I'll take all years profit. In this years, in 2016 the profit is 1 lakh including abnormal loss. In previous lecture I was explained various adjustments related to the abnormal loss, abnormal gain, non-business income, non-business expenses. We have to deduct or add these terms. So in this year there is a abnormal loss which is 1 lakh. So क्या करते हैं हम, एबनॉर्मल, कोई भी एबनॉर्मल लॉस, अगर कोई भी एबनॉर्मल लॉस किसी भी ईयर से रिलेटेड है तो उस एबनॉर्मल लॉस को अकॉर्डिंग टू द रूल वी हैव टू ऐड। आपको क्या करना है, उसे ऐड। तो कितना है ये एबनॉर्मल लॉस, 1 lakh. In 2017 the profit is 2,60,000 including abnormal gain. प्रॉफिट कितना आपको गिवन है, 40,000. then we have to deduct this 40,000 from 2017. In 2014 1,50,000, there is no adjustment. 2015 there is no adjustment. In 2016 related adjustment is related to abnormal loss, we have to add it. In 2017 there is an adjustment which is related to abnormal gain, we have to deduct it. In 2018 there is no adjustment, so adjusted profit first year is 1,50,000, in second year 1,80,000, in third year profit is 2 lakh, in fourth year 2,20,000, because we have to deduct 40,000 from 2,60,000, and last year 2,40,000. Now total adjusted profit. $9,90,000. Now we have to calculate average profit. What is the formula? Total adjusted profit upon number of
years. So total profit is 9,90,000. And how many years are there? 1, 2, 3, 4 and 5. So 1,98,000. The average profit is 1,98,000. After that we have to calculate normal profit. So what is the formula of normal profit? Capital employed into rate of return. So what capital employed? The firm has total capital employed. कैपिटल एम्प्लॉयड आपको मीन्स कैपिटल की टर्म में आपको मेंशन नहीं है इस क्वेश्चन में. तो आई हैव एक्सप्लेन 2 formulas फॉर कैलकुलेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड. In this question we have to calculate capital employed through asset side approach. I have explained 2 terms, capital side approach and asset side approach. In this question we have to calculate capital employed through asset side approach. So what is the formula of capital employed? इस क्वेश्चन में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल एसेट्स और लाइबिलिटीज आउटसाइडर लाइबिलिटी के थ्रू कैलकुलेट करनी है. तो मींस टोटल एसेट्स में से अगर कोई फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं या गुडविल होती है, अगर वो क्वेश्चन में गिवन होती है तो हमें उन्हें माइनस करना होता है. बस इस क्वेश्चन में ऐसी कोई टर्म आपको मेंशन नहीं है. तो आपको जितनी भी टोटल एसेट्स गिवन है उन टोटल एसेट में से आउटसाइड लाइबिलिटीज या आउटसाइडर्स को पे करने वाली जितनी भी लाइबिलिटीज है उनको क्या कर देना है, माइनस कर देता है. उसको माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू आपको फाइंड होगी वो क्या होगी, आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड. सो कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लाइबिलिटी. तो आपको क्वेश्चन में टोटल एसेट्स गिवन है. कितनी है आपकी टोटल एसेट्स? 20 लाख. और आउटसाइडर लाइबिलिटीज कितनी है? 5 लाख. 20 लाख आपकी क्या है? टोटल एसेट्स एंड आउटसाइडर लाइबिलिटीज इज 5 लाख. सो कैपिटल एम्प्लॉयड इज 15 लाख. सो after that we have to calculate normal profit. Capital employed is this. कैपिटल नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न. तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमने कितना कैलकुलेट किया है? 15 लाख इनटू रेट ऑफ रिटर्न, जो कि क्वेश्चन में आपको कितना दिया हुआ है? दिस 10%. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ rate of return which is given in the question is 10%. So normal profit is 1,50,000. Normal profit is 1,50,000. Now the third step is calculate super profit. What is the formula of super profit? Average profit minus नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है. वो कितना है क्वेश्चन में? 1,98,000. 1,98,000 माइनस, और आपने नॉर्मल प्रॉफिट हमने कितना कैलकुलेट किया? 1,50,000. 1,50,000. सो सुपर प्रॉफिट इज सॉरी 1,48,000. 1,98,000 minus 1,98,000 minus 1,50,000. So sorry, 48,000 is the super profit. Now what is the formula of goodwill? What is the formula of super profit into number of year purchase? Super profit is 48,000 and number of years
हाँ, number of years question given in the question 3-year purchase. So 0, 0, 0. Answer. Clear? This is the answer and this is the value of goodwill. I hope you all will understand this type of sums, and this chapter is very easy, so please try to solve these numericals related to the average profit method, weighted average profit method and super profit method. In next lecture I will explain the third method, which is related to the capitalization method. Thank you.